Hello students, welcome to my channel. This is the second part of integration by partial fraction, that is exercise 3.4 second part. इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में तीन टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली कवर किए गए हैं. इसके प्रीवियस वीडियो में आप पढ़ चुके कि हाउ टू सिलेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन बाय वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स. मीन्स जो भी टाइप का क्वेश्चंस आएगा, यानी जस्ट यू हैव टू ऑब्जर्व डिनोमिनेटर. इफ डिनोमिनेटर इज प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड फैक्टर्स, और सेकेंड टाइप में आ सकता है डिनोमिनेटर इज रिपीटेड फैक्टर, linear polynomial but repeated, and third type is denominator polynomial is a linear polynomial into quadratic polynomial. तो इस टाइप के वेरियस टाइप के क्वेश्चंस में हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे सिलेक्ट करना है इस पर हम डिस्कस कर चुके हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस a second part of exercise 3.4. Now question number 1, evaluate integration of 2x square minus 1 upon x raised to 4 plus 9x square plus 20 with respect to x. Solution. Let I is equal to the given integration. तो हम सबसे पहले given integration को I assume करेंगे. Now here you have to observe the given sum. It is quadratic upon the polynomial having degree 4. Okay. लेकिन डिग्री 4 में ऐसा कोई मेथड आपको बताया नहीं. आप चाहे तो प्रीवियस वीडियो का टेबल देख सकते हैं. दैट टेबल कंटेनिंग लीनियर पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स और लीनियर पॉलिनोमियल बट रिपीटेड एंड लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक. तो हम यहाँ पर जो रेश टू 4 पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4, इसे स्प्लिट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में. से सपोज मान लो एक्स स्क्वेयर अगर हम टी लेते हैं यहाँ पे, तो यू विल गेट एक्स स्क्वेयर रेश टू 4 इज नथिंग बट क्या आ जाएगा वो एक्स स्क्वेयर. आई वांट टू शो यू. सी एक्स स्क्वेयर इज नथिंग बट टी, मीन्स एक्स रेश टू 4 इज nothing but t square plus 9t plus 20. See, it is quadratic in terms of t. So what are the factors of this polynomial? It is nothing but t plus 5 into t plus 4. That's it. और आप पहले t plus 4 भी लिख सकते हैं और बाद में, because of it is multiplication form and multiplication is commutative. a into b is equal to b into a. तो ये आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टी लीनियर फैक्टर्स. ओके, तो इस तरीके से हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं. तो व्हाट इज टी? टी इज नथिंग बट एक्स स्क्वेयर. यहाँ पे एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4. इस तरीके से हमें फैक्टर्स मिल जाएंगे. तो सेम प्रोसीजर हमें अप्लाई करना है. दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ 2x square minus 1 upon x square plus 4 into x square plus 5. Now again you have to observe denominator polynomial. What is denominator? It is product of quadratic polynomial. और इस तरीके से कोई मेथड नहीं है कि इसे सिंप्लीफाई कर सकते. सो यू हैव टू फाइंड आउट पार्शियल फ्रैक्शन. फॉर दिस, फॉर फाइंडिंग पार्शियल फ्रैक्शन just put t is equal to x square. In this case don't find out dx. हम जब भी इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते तो उस वक्त हम यहाँ पर dx फाइंड आउट करते. ओके, लेकिन यहाँ पर नोट करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन में हमें dx फाइंड आउट नहीं करना है. तो यहाँ पे मेंशन किया हमने फॉर फाइंडिंग पार्शियल फ्रैक्शन ओनली. Just you have to find out partial fraction, put t is equal to x square. Okay, so it become 2x square minus 1 upon x square plus 4 into bracket x square plus 5 is equal to twice t minus 1 upon t plus 4 into t plus 5. तो देखिए यहाँ पे लीनियर फॉर्म आ गया.
हम वापस बोल रहे हैं यहाँ पे dx निकालना नहीं है, dx अगर निकालेंगे तो इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड, तो इंटीग्रेशन सॉल्व ही नहीं होगा, दैट इंटीग्रेशन इज नॉट इंटीग्रेबल. सो जस्ट यू आर टू फाइंड आउट पार्शियल फ्रैक्शन, पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर. अब ये फॉर्म तो आपको फैमिलियर है, इसके प्रीवियस पार्ट में हम पढ़ चुके. यानी प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर होंगे एंड दैट इज नॉन रिपीटेड. तो क्या करते हैं, कैपिटल ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस कैपिटल बी अपॉन सेकंड फैक्टर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. देन आफ्टर दिस, yes, you have to find out, you have to take LCM and cross multiplication, means just you have to simplify RHS by taking LCM and cross multiplying, that is twice t minus 1 upon t plus 4 into t plus 5 is equal to a into bracket t plus 5 plus b into bracket t plus 4 upon denominator is nothing but t plus 4 into t plus 5. तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर कॉमन है, दिस गेट कैंसल, डिनोमिनेटर गेट कैंसल, देन यू विल गेट twice t minus 1 is equal to a into bracket t plus 5 plus b into bracket t plus 4. Suppose this is equation number 2. हमें भी a and b find out करना है. What are the values of a and b? A and b are arbitrary constant. You have to find out a and b. How to find out a and b? इसके पहले भी के पार्ट में हम पढ़ चुके कि what is the procedure for finding a and b. तो भी हम इसमें बताते हैं, फॉर फाइंडिंग a पुट डिनोमिनेटर ऑफ a is 0, that is t plus 4 is 0, you will get t is equal to minus 4 and substitute in equation number 2. जहाँ पर t होगा वहाँ पे minus 4 substitute करेंगे, means replace t by minus 4, you will get 2 into minus 4 minus 1 is equal to a, see equation number 2, a into bracket what is t, minus 4 plus 5 plus b into 0. so you will get a is equal to, देखिए यहाँ पर a क्या मिल रहा है हमें, that is minus 8 minus 1 is equal to a into minus 4 plus 5 is how much, that is 1. So it become a is equal to minus 9, that's it. तो हमें a मिल गया यहाँ पर, राइट. तो a is equal to माइनस 9, चाहे तो इसे बॉक्स कर सकते हैं आप, ब्रैकेट कर सकते हैं. जस्ट यू हैव टू फाइंड आउट, मेक अ ब्रैकेट फॉर द वैल्यू ऑफ a एंड b. ओके, अगेन पुट t इज इक्वल टू minus 5 और सब्स्टिट्यूट t plus 5 is 0. So you will get t is equal to minus 5. Then the equation second become 2 into minus 5 minus 1 is equal to a into 0 plus b into bracket minus 5 plus 4. So again simplify this, that is minus 10 minus 1 is equal to 0 minus b minus 4 minus 5 plus 4 is nothing but minus 1 into plus b, it become minus b. So b is equal to plus 11. Okay, b is 11 here. So you will get a and b, right. Just you have to substitute the value of a and b in equation number 1, that is nothing but twice t minus 1 upon t plus 4 into t plus 5 is equal to minus 9 upon t plus 4 plus 11 upon t plus 5. On integrating on both sides, replace t by x square here, और पहले t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन इंटीग्रेशन लेंगे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसमें. देर आर सेम प्रोसीजर, मीन्स हियर इंटीग्रेशन ऑफ टेकिंग इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x square plus 4 into x square plus 5, and that is nothing but I. So I is equal to integration of RHS. Here taking separate integration, and you have to write constant number outside the integration sign, that is minus 9 into integration of 1 upon x square plus 4. What is 4? 2 square plus 11 into integration of 1 upon यहाँ पर dx ऊपर होना चाहिए, that is dx upon x square plus under root 5 the whole square into dx, और dx upon भी लिख सकते हैं आप. तो it is nothing but, see, this is standard form integration of dx upon x square plus a square form,
and that is nothing but 1 upon a into tan inverse of x by a plus c. That's it. Okay, means these both integration are in standard form, so it become 1 upon 2. What is a here? In this case, a is equal to 2, and in second integration, a is equal to root 5. So by using standard formula, it become minus 9 into 1 by 2, or directly you can write minus 9 by 2 into tan inverse of x by 2 plus 11 into 1 by under root 5, or you can write 11 upon under root 5 into tan inverse of x by root 5 plus c. That's it. This is the final answer. Okay. Now question number second. This is also same type. It is in square form. That is, evaluate integration of x square upon x square plus 1 bracket complete into second bracket x square minus 2 into x square plus 3 bracket complete into dx. Again you have to observe denominator polynomial. It is a product of 3 factor, but each factor is quadratic. So you have to apply the previous method here. For finding partial fraction, just you have to substitute t is equal to x square. In this case, don't find out dx. So the given expression become t upon t plus 1 bracket complete into t minus 2 bracket complete into third bracket t plus 3 is equal to a upon first factor plus capital B upon second factor plus capital C upon third factor. This is equation number 1. Now you have to simplify RHS by taking LCM and cross multiplying. You will get t upon t plus 1 bracket complete into t minus 2 bracket complete into third bracket t plus 3 is equal to, by LCM and cross multiplying, here the denominator get cancelled because of it is similar term. So t is equal to a into bracket t minus 2 into t plus 3 plus b into bracket t plus 1 into t minus t plus 3 plus c into bracket t plus 1 into t minus 2. This is equation number second. Here you have to find out capital A, capital B and capital C by using same procedure. For finding capital A, put denominator of t is 0. In this case, put t is equal to minus 1, or you can substitute t plus 1 is 0. You will get t is minus 1 in equation second. तो जहाँ पर t होगा वहाँ पर हम माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो इक्वेशन सेकेंड देखिए, t इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पर LHS आ जाएगा माइनस 1 इज इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट माइनस 1 माइनस 2 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू सेकेंड ब्रैकेट माइनस 1 प्लस 3 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 0, बिकॉज ऑफ b multiply with t plus 1 factor and that is 0, c also multiply with t plus 1 factor. ओके, तो 0 आ जाएगा. देन इट बिकम, यहाँ पर हम सिंप्लीफाई करते हैं. सी माइनस 1 माइनस 2 हाउ मच? इट इज माइनस 3 इंटू सेकेंड ब्रैकेट माइनस 1 प्लस 3, इट इज नथिंग बट प्लस 2. सी माइनस 1 minus 2 is minus 3 into plus 2, it become minus 6. So minus 1 is equal to minus 6a is plus 0 plus 0, that is minus 1 is equal to minus 6a implies that a is equal to 1 by 6. तो यहाँ पर a हमें मिल गया. अगेन सब्स्टिट्यूट t plus और t minus 2 is 0, so you will get t is equal to 2. Put t is equal to 2 in equation second, you will get 2 is equal to a into 0 plus b into 2 plus 1. यहाँ पर जहाँ पर t होगा वहाँ पे हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे. जहाँ पर t होगा वहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करना है. इट बिकम 2 plus 1 into bracket 2 plus 3 plus c into 0. So it become 2 is equal to 15b, hence b is equal to 2 by 15. Again substitute t plus 3 is equal to 0,
So you will get t is equal to minus 3 in equation second. You have to substitute in second. After simplifying, you will get c is equal to minus 3 by 10. Then equation 1 become, just you have to substitute the value of a, b and c in equation 1. So equation 1 become x square upon x square plus 1 into x square minus 2 upon x square plus 3 is equal to a upon t plus 1 plus b upon t minus 2 plus c upon t plus 3. तो यहाँ पर हमें a और b सब्स्टिट्यूट करना है. जस्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a, b, c and that is nothing but x square upon x square plus 1 into x square minus 2 into x square plus 3 is equal to 1 by 6 upon x square plus 1 plus 2 by 15 upon x square minus 2 minus 3 by 10 upon x square plus 3. Then by taking integration, what is integration of LHS? It become I is equal to 1 by 6 into integration of x square plus 1 dx plus 2 by 15. You have to write outside the integration sign, that is nothing but 2 by 15 into integration of 1 upon x square plus minus 2 minus 3 by 10 integration of x square plus root 3 the whole square. Okay, again it is standard form. All integration is standard form. See here the first is nothing but tan inverse form. यहाँ पर हम लिखेंगे √2 द होल स्क्वायर सेकेंड वाले में, तो इट बिकम 1 by 6 tan inverse of x upon 1 means there is tan inverse x plus 2 by 15. Here is some correction. It is minus √2 and here plus √2, because of here √2 the whole square यहाँ पे होना चाहिए. See here it is √2 the whole square. Okay, so it become x minus log of x minus √2. Here x plus √2 is here, minus 3 upon 10 into 1 upon √3 into tan inverse of x upon √3 plus c. That's it. Okay, तो यहाँ सम करेक्शन है, इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है. Just you have to convert in perfect square form, √2 the whole square. So x minus यहाँ पे आ जाएगा x minus √2 and डिनोमिनेटर में log of x plus √2. Okay, इस तरीके से करेक्शन करना है. Now next one is question number 3rd. Evaluate integration of x square upon x raised to 4 plus 5x square plus 6. Solution, let I is equal to the given integration. Again it is a polynomial having degree 4 though, so you have to split in terms of product of two factors, that is x square plus 3 into x square plus 2. That's it. Again you have to apply by integration by partial fraction, but this is very simple form. Just you have to observe the numerator, it is only x square. So you can convert numerator in terms of denominator, or you can apply previous method. Okay, just I want to show you here by another method, that is very simple one. Just convert numerator in terms of denominator, that is I is equal to, capital I is equal to integration of 3 into bracket x square plus 2 minus 2 into bracket x square plus 3 upon x square plus 3 into x square plus 2 with respect to x. अगर ये आप ओपन करेंगे इसे, just you have to simplify. See here 3x square आ गया, then plus 3 into plus 2 it become plus 6, again minus 2x square it become minus 2x square, then minus 2 into plus 3, that is minus 6. Here minus 6 plus 6 get cancelled, then 3x square minus 2x square, how much? It is nothing but x square only. So you have to convert numerator in terms of denominator, then split this. It's very simple form. It is nothing but integration of 3x square plus 2 upon x square plus 3 into x square plus 2 minus 2x square plus 3 upon x square plus 3 into x square plus 2. See here x square plus 2 get cancelled. After cancelling similar factor, you will get integration of 3 upon x square plus 3 minus 2 upon x square plus 2 with respect to x.
and it is standard form. So you have to convert in perfect square form. It becomes 3 into integration of 1 upon x square plus root 3 the whole square minus 2 into integration of x square plus root 2 the whole square. Okay, now it is tan inverse x form. So it becomes 3 into 1 upon, what is a here? A is nothing but root 3. That is 3 into 1 upon root 3 into tan inverse of x upon root 3 minus 2 into 1 upon root 2 into tan inverse of x upon root 2 the plus c. Now again you have to simplify here. root 3 get cancel here. यहाँ पे root 3 बच जाएगा. Similarly here root 2 get cancel, numerator containing root 2 here. So it become given integration I is equal to root 3 into tan inverse of x upon root 3 minus root 2 into tan inverse of x upon root 2 plus c. That's it.